All right, we are live. Hello, people. Welcome to Ball and Banter. We are at the end of day two's play in Perth. पर्थ का घमंड तोड़ने के लिए पहुंच चुकी है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में. Let's go. Let's go. Let's go. So yeah, I think end of day two. Just like a quick recap. So yeah, I think India has made 172 for no loss. Jaiswal is batting on 90, batting beautifully. KL Rahul, I think काफी अच्छा खेल रहा है KL Rahul भी at 62. And India is leading by 218 runs. I think जब डे स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी सेवन विकेट्स गिरे हुए थे and Alex Carey and Mitchell Starc were there at the crease. Yes. And yeah, Bumrah got a wicket with the first All yeah. That first ball of the dream day. start dream start because you see इंडियन क्रिकेट में वो एक ओवरसीज जब जाते हैं तब एक पार्टनरशिप बनता है कोई टेल एंडर्स का विद सही में. तो ऐसे डर था कि कैरी एक काउंटर अटैक करे बिकॉज फॉर्म में भी था बिफोर दिस सीरीज आई थिंक इन शेफील्ड शील्ड और समथिंग ही स्कोर्ड बैक टू बैक हंड्रेड्स और व्हाटएवर तो Yeah, ऐसे yeah. Even before this, also, I think he's been like their go-to guy, right? Like, इसके पहले वाले सीरीज में भी he was the one who was always scoring. वो ही नीचे आके बचा रहा था. Yeah. so that was there, that fear was there, but then dream start by one and only Jassi by World Cup. So yeah, I mean, क्या बोलेंगे और that was a dream start, but then there was a resistance from Starc and Hazlewood and especially Mitchell Starc 100 ball खेला almost and वो partnership भी 20 over खेली है. So but the good thing was they didn't score many runs. They scored 24 runs uh, in that partnership. So yeah, Yeah. a lead on of 48 or something on that pitch is too good. After you are bundled out for 150. So भाई great. बट कल से लेके आज तक मतलब काफी चेंज हो गया है, राइट? लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक दो डिफरेंट सर्फेसेस पे ये लोग खेल रहे हैं. कल Yeah. जब ये लोग खेल रहे थे, barely any batter was able to get ball on bat on ball. And आज तो भाई KL Rahul and Yashasvi Jaiswal, when they were playing, I think Jaiswal had two catches. One I think was a close call जो ये ख्वाजा को आया था, मतलब सिर्फ उसके जस्ट आगे गिरा था. दैट वाज अ प्रेटी टफ वन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कैच जायसवाल को उन लोग ने ड्रॉप किया. बट अदर देन दैट आई डोंट सीम टू रिकॉल एनी सॉर्ट ऑफ चांसेस. Chance, that's it. KL Rahul भागना चाहता था, but then Jaiswal said no. So that is, I think, the best chance of getting a wicket right now is the run out. या Because या हो ही नहीं रहा है pitch में and they are so deflated. They are completely deflated. You can see the body language. Usually Australians they try to chirp a bit, but यहाँ पे जयसवाल गाली दे रहा है, स्टार्क को बोल रहा है. जयसवाल स्टार्क को बोल रहा है भाई कि तेज नहीं आ रहा है, इट्स वेरी स्लो, कमिंग वेरी स्लो. Yeah. तो भाई मतलब वो छोड़ ब्रो, लाइक मार्नस लाबुशेन को बॉलिंग दे दी. अभी लाबुशेन को बॉलिंग दे दी, मतलब पता ही है कि भाई वो लोग सब गिव अप कर चुके हैं. और लाबुशेन आके बाउंसर पे बाउंसर डाल रहा है. भाई वो फास्ट डाल रहा है ही 135. इज बॉलिंग 135 एंड आई वाज सरप्राइज. मैं कहा भाई ये 135 वगैरह कैसे डालने लगे? मतलब ही इज नॉट जस्ट लाइक ऐसे टाइम पास बॉलर नहीं है वो. डालता है यूजुअली वनडे क्रिकेट. हाँ. फर्स्ट टाइम 135 डाल रहा है. नहीं, तो बट उनके वो शील्ड क्रिकेट में ही हैज बीन बॉलिंग, राइट? लाइक तो आई थिंक है हाँ उसको शौक है बॉलिंग करने का काफी. बट Hey, we have Varun in the chat. Hey, Varun, what's up? What's up? Yeah, so pretty interesting, right? Like, I think कल से चालू करते हैं भाई. कल तो I think when the day started, what did you think about that winning the toss, batting first? I think this is just the fifth match that has been played at this new Perth Stadium. And चारों मैचेस अभी तक ऑस्ट्रेलिया पहले टॉस जीता है. मतलब टॉस जीता इन द सेंस whichever team has batted first has won, and that has been Australia. yeah, so I think it was a brave call. It was a good positive call to bat first on that type of a track, especially considering that we got punted out for 46 on a similar track. So Mm-hmm. it was a bold call and we got off to a bad start, obviously. First tour for a lot of these guys, Jaiswal and
Padikkal, Yeah. right? So it was a tough start, but then there was a resilience shown by KL Rahul. There was Rishabh Pant in his like unorthodox style. वो पीछे कैसे भी कुछ भी उसको बिना कुछ सोचे उसने पीछे स्कूप मारा है, कम इन से उसको सही दो. में, सही वो में dude, he just like आई थिंक मतलब दैट brings that excitement to test cricket, right? Like you're having a good time every time you're watching Rishabh Pant bat. आई थिंक दैट शॉट डीमोटिवेटेड ऑस्ट्रेलिया की भाई क्या कर रहा है. और वो पार्टनरशिप पे बना. नीतीश रेड्डी प्लेड वेरी वेल ऑन हिज डेब्यू. ही शोड यू नो दैट composure of like I belong to this level somewhat. Yeah. So that was very heartening to see. And Australia, I think they messed up when they got Nathan Lyon in. Because फिर वो चौके मारते गया उसको नीतीश कुमार रेड्डी. तो आई काफी थिंक भाई रिवर्स स्वीप भी मारा उसने उसको, मतलब या उठा के भी मारा, तो आई थिंक दे वर अटैकिंग हिम. बट या लेट्स गो वन बाय वन, राइट? लाइक हाँ डे वन में स्टार्टिंग में तो आई थिंक यशस्वी ऑल्सो आई थिंक गॉट आउट स्ट्रीकी एज. उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, भाई देवदत्त पडिक्कल लुक वेरी नर्वस एंड राइटली सो, राइट? मतलब उसने खेला नहीं है अभी इतना, एंड एकदम से तुम उसे डीप एंड में डाल रहे हो कि भाई जा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल ले फोर्थ में. तो ही लुक्ड अ बिट एट श्योर. बट उसके बाद देन यार विराट कोहली, वो क्या लग रहा है भाई विराट कोहली का? या मतलब ट्विटर अब खोल के देखा क्या भाई तूने? सब एकदम एवरीवन्स लाइक ओ कैप्टन कोहली इज गाइडिंग या जसप्रीत बुमराह एंड या ऑल ऑफ दोस थिंग्स. आई एम लाइक ओके, ऑल ऑफ दिस पीआर इज फाइन, बट जो उसको मेन काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा उससे थोड़ा. लेट्स सी ब्रो. अभी मतलब टफ पिच था थोड़ा. एंड वो हाँ. अटैकिंग माइंडसेट में आया तो थोड़ा आगे आके खेला. बॉल थोड़ा बाउंस हुआ और गया स्लिप के पास. बट या आई मीन कोहली, आई डोंट नो, maybe he's thinking too much or I don't know what's happening. But I'm sure अभी हम्म. अच्छा सेट हो गया उसके लिए. तो let's see. But also the worrying thing was he dropped a catch, which was like a very easy catch. या केएल राहुल बेचारा सेलिब्रेट करने गया था यार. सही में उसने सेल्फ, और कैच अजीब सा था ब्रो, उसने ऐसे कप कर लिया था पूरा एंड देन ही ड्रॉप्ड इट, स्पिल्ड Yeah, इट. yeah, तो वेरी अनयूजुअल. yeah. But we'll get to that later. So continuing from that, like we were like uh, three down or something for 30 odd runs again. हम्म. And then like Pant came, he started to, play his counter-attacking game. KL उसी Rahul, ने बचाया भाई. uh, KL Rahul played very well actually in the first innings. He ate up balls, he was looking good. But then ही लुक्ड सॉलिड डूड, ही लुक्ड yeah, like even though ऋषभ पंत एंड नीतीश रेड्डी ने अपने लिए सारे रन्स बनाए, but he was there when it was really tough, right? yeah, And he looked like a proper test batter, जो you can say that about very few other batters in our team. मतलब proper technique, he was leaving most of the balls, मतलब yeah. good temperament, uh, and got out to a contentious decision. I Uh, mean, Wakey angle conveniently they showed for that. So हाँ मतलब I इतना mean, ये लोग अभी बोस्ट कर रहे हैं कि क्या 70-80 कैमरा लगाए हुए हैं हमने, फॉक्स का ब्रॉडकास्ट ये वो, बट क्लीन एक अपना क्लीन कैच था उसके लिए उन्होंने 7 एंगल दिखा है ब्रो. 7 एंगल सही दिखा. में, सही में. So yeah, I mean, he got unlucky there, I believe. But yeah, after that middle phase is where we are like ahead, I feel, because these three players they played very well. Uh, हम्म. Nitish Reddy, Rishabh Pant, and KL Rahul. So we got 150, which we felt a bit under par because we thought that Australians are like pretty good at their backyard and this is like their most favorite ground also. So उस yeah, टाइम पे क्या तेरे क्या थॉट्स थे जब 150 के ऊपर बिखर गए थे? उस टाइम पे लगा कि ये लोग ले लेगा, 100 का लीड ले लेगा. कुछ लोग 200 का लेगा, बट 200 वॉज नॉट पॉसिबल ऑन दिस पिच. मेरे को ऑनेस्टली लगा था 100 रन का लीड लेगा बिकॉज द बॉलिंग अटैक वाज आल्सो इनएक्सपीरियंस्ड. या वाज ओनली बुमराह. भाई मेरे को तो उस टाइम फुल एकदम गुस्सा आ रहा था, लाइक ब्रो ये क्या कर दिया है. मैं कहे गौतम गंभीर को हटाओ, इसको पता नहीं है टेस्ट मैच के अंदर कैसी टीम बनानी है, क्या टैक्टिक्स बनाने हैं. एंड एट दैट पॉइंट टाइम यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट देव डन, राइट? राइट फ्रॉम कि भाई ये देवदत्त पडिक्कल को क्यों लेके आए, केएल राहुल को ओपनिंग क्यों भेजा. मतलब केएल राहुल चल फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस गाय, इज डन दैट रोल बिफोर. देन हर्षित राणा को क्यों खिला रहे हैं? आकाशदीप हैज बीन डूइंग वेल इन इंडिया, so he Yeah. should be ideally continuing.
उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बीइंग प्लेड ओवर बोथ आर वेटरन्स. अश्विन एंड जडेजा को साइड पे करके तुम वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ रहे हो. एंड possible reasoning is that maybe he is a better batter than both of them and he can float in the batting order. So you start questioning all those things, right? Even Nitish Kumar Reddy also बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है वो. एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही इज इमर्ज्ड मोर एज अ बॉलर देन अ बैटर. Yeah. So that is again, but yeah, when you see all of these things with like now, and you're like, ठीक है भाई, वो 41 जो नीतीश ने बनाया फर्स्ट इनिंग्स में, then after that, whatever bowling performance may be, we'll come to the bowling performance as well. But yeah, Nitish Kumar Reddy, first outing in Test matches, Very I think impressed. he looks like he belongs there, man. He looks like he belonged. ऐसे लगा नहीं कि फ्लस्टर्ड नहीं लग रहा था. And he came in at a tense situation, right? Like सारे अपने बड़े बैटर्स आउट हो चुके थे. Like even his defense, he looks compact. It's not like या मैं ऐसे आंख बंद करके मार रहा हूँ. ऐसा नहीं है. वो उसमें है थोड़ा टेम्परामेंट है, डिफेंस है. या बिकॉज इन you need a proper defense. Or else ट्रू. like you're a shot maker, then है 2-3 बॉल में आउट. जैसा वो हर्षित राणा वो शॉट मारते मारते गया आउट हो गया. ट्रू लाइक ट्रू ट्रू. तो I think before we go ahead, no, I just want to tell anyone who's watching, please like the stream. We want more and more people to find out about ball and banter. And भाई chat के अंदर हमें बताते जाओ आप लोग भी कि क्या, what were your thoughts about the day's play? What are your thoughts on India's chances in the series? And जो भी मन में आ रहा है बस लिखते जाओ. ठीक हाँ, है, let's go on. अमित, तो तू बोल रहा था हर्षित राणा की बैटिंग, एंड आफ्टर दैट आई थिंक बुमराह आया था. बुमराह ने भी बुमराह. लगाया एक और बस खत्म. डीएसपी को तो एक बॉल भी नहीं मिला खेलने को. भाई कुछ भी बोलो, एक ही प्लेयर नॉट आउट गया एंड में, ठीक है. यहाँ पे मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये डीएसपी सिराज. इंफिनिटी ब्रो. डीएसपी सिराज just like stat padding out there. या. But yeah, I think coming to India's bowling, right? Like that classic thing that everyone says, that you don't know, you can't say anything about the pitch till the time both teams have batted on it. या. And मतलब तुम कितना भी क्रिकेट देख लो, कितना भी ये देख लो, बट लाइक एवरी टाइम इट सरप्राइजेस यू. या. एंड भाई उसके बाद जब चालू किया, तेरे पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है, क्या. ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैं बोलूं फर्स्ट ओवर इतना अच्छा नहीं था. बुमराह ने हाँ लास्ट पे बहुत बॉल डाले थे ख्वाजा हाँ हाँ. स्विनी को भी. वो मैक्स स्विनी भी लूज. सेम प्रीफर्ड या. लगा उसमें. फिर आया बुमराह का वो एक बॉल अंदर. आई थिंक कोहली कन्विंस्ड हिम टू टेक द डीआरएस. दे वर नॉट लाइक पंत वाजंट कन्विंस्ड की. अरे तू भी ये वो ट्विटर वाले लोगों जैसे बात कर रहा है कि कैप्टन कोहली, कैप्टन कोहली. तो हाँ मतलब अच्छा हुआ रिव्यू लिया उन लोग ने. बिकॉज लाइक अंपायर ने नॉट आउट दिया था. सो इट वाज लाइक इट या हैज रेड्स. एंड आफ्टर दैट लाइक दे जस्ट फेल लाइक 9 pins. There was a drop catch also, by the way. Labuschagne ड्रॉप क्या. out on the second ball. सही में. Like they could have been in a worse state, or I don't know. Labuschagne's innings probably helped the collapse also because he was like going nowhere. He was looking like a, I don't know, tail ender उससे better खेल रहे हैं bro. Hazelwood उससे better खेला actually. तो तो yeah. हेजलवुड भाई, स्टार्क ने भी बहुत बहुत बॉल्स खेल लिए. Yeah. Speaking of Starc, right? Like if you see, Mitchell Starc faced the most number of balls in the first innings, right? Yeah. That, matlab, Rishabh Pant was the second highest one, and then KL Rahul. That just goes on to tell you like the pitch has been deteriorating. And hey, Shashank is there in the chat. Bode for India captain. Thanks, man. One day, why not? But yeah, Mitchell Starc facing 112 balls. I think that showed कि मतलब pitch थोड़ा हो रहा था. The signs were there yesterday that it was sort of easing out later in the day, and that is what has like played out today as well. And मतलब quite telling, right? Like आज सुबह भी Mitchell Starc was the one who sort of got stuck in. एंड में आई थिंक वो आउट भी हुआ, मतलब वो हो गया था, वो बोर हो गया था. ये जस्ट लाइक बस ठीक है भाई, अभी इससे Yeah. ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे. So I think he just like gave up his wicket in the end. Uh, but yeah, I think one guy who impressed me a lot, like with his bowling, definitely I think DSP. Good to see DSP Siraj back in action, firing again.
मतलब कल सेकंड फर्स्ट स्पेल उसका सो था, बट सेकंड स्पेल में ही फाउंड हिज And he was रिदम. sledging also. He was sledging Labuschagne, उसको कुछ तो बोल. सही में हाँ, वो वो भी. एक वो लाबुशेन ने वो बैट से बॉल साइड पे किया, वो देखा, वो फिर क्या कहते हैं, सिराज उसके पास जाके ऐसे कर रहा है कि अरे भाई. हाँ. एंड उसके पूरे अभी मीम्स बन गए हैं कि भाई ऑफिशियल आईडी मोहम्मद सिराज है, बाकी सब फेक है. But yeah, I think he got both of these guys out, right? Like Mitchell Marsh and Jailed Labuschagne. them, bro. He jailed them. With them, reprimanded them. But yeah, I think great bowling from him. But Harshit Rana, I think good Oh, pick, damn. good pick. हाँ, Uh, Tall bowler, feisty, yes. aggressive. Pace भी अच्छी डाल रहा था यार. He was often bowling upwards of 140. He reminds me of उमेश यादव sort of. Same build है उसका थोड़ा. और वो वैसे ही like डालता है Yeah. थोड़ा. और तो he reminds me of a lot of उमेश यादव. और वो ट्रेविस हेड को क्या बॉल डाली थी ब्रो उसने, सीधा अंदर. वो ही भाई एक वो को ट्रैप. अगर होता कोई एक बॉल वैसे लगती थी अपन, बट नेवर माइंड, वी डोंट टॉक अबाउट दैट गेम. By that, Travis Head's dismissal has been apparently the most replayed video in या, India since yesterday. डैम ब्रो. एंड लाइक द सेलिब्रेशन आल्सो, आई थिंक ही डिड अ रोनाल्डो सेलिब्रेशन, आई थिंक उसने वो या सू. या सू मारा उसके बाद. सो या आई मीन, एंड ही बोल्स शॉर्ट. ही बोल्स लाइक नेथन लायन को भी पूरा उसने एक शॉर्ट बॉल से डरा के उसने ले लिया उसका एज, और मिचेल स्टार्क को भी स्लेज किया था. मिचेल स्टार्क को भाई, मिचेल स्टार्क उसको बोल रहा है आई बोल फास्टर देन यू एंड आई हैव अ लॉन्ग मेमोरी टाइप्स. का भाई ठीक है, डाल लेना तू अपने टाइम पे. बट या हर्षित राणा प्रीटी इंप्रेसिव, आज भी उसने विकेट निकाले सुबह. तो हाँ, good stuff, good on him. And yeah, I think इंडिया एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड लगा लेंगे रन, और फिर भी मतलब काफी देर वो लोग टिके रहे, बट थैंकफुली वी गॉट दैट लीड ऑफ 47-48 रन्स coming into our batting innings. uh, before that, I yeah, would, and like Indian. It's not easy being an Indian fan when you go overseas. You still have yeah. memories, flashbacks of 36 Trauma. and what all these collapses that we have. But सही bhai, में. okay, 172 for zero. I mean, That unbelievable, is insane. दैट unbelievable. इज इनसेन राइट. लाइक मतलब एंड में तो अभी डे के एंड पे ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी लैंग्वेज वाज लुकिंग सो अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस. They were like, क्या हो रहा है भाई, कौन क्यों केएल राहुल मार रहा है, जायसवाल मार रहा है, इनको हम लोग ने पहले उसमें चीपली आउट किया था. व्हाट इज हैपनिंग, they were looking flat. So yeah, and this is now the perfect platform for us to just like go for it, go for the kill. Bro, I want to talk about uh, what our boys have done today, right? With Yashasvi Jaiswal and KL Rahul. So what you see on your screen is the highest number of opening partnerships for India outside India. Yeah, Okay. Surprisingly, Gautam Gambhir is there in that. Gautam Gambhir, Sehwag at Centurion 137. KL Rahul, Rohit Sharma at Lords. yeah. Then Agarwal and KL Rahul at Centurion. Hmm. And आज का Jaiswal and KL Rahul at Perth. And then KL Rahul and Rohit Sharma at Nottingham. So in 2021, KL Rahul and Rohit played very well. Like that opening, उन लोग ने पूरे Bro, ब्लंट किया था वो सीरीज में. do you think we as fans don't appreciate this KL Rahul guy enough? तू इंडिया के हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप्स देखेगा since 2010 outside India, and he is there in 4 out of the top 5 opening partnerships. But we don't appreciate him because he's inconsistent. Because we all know he can do all this. Hmm. He doesn't do it regularly. But overseas, I think he's a specialist player. I think he should play overseas in whatever test that he like we go. Because उसके पास वो टेक्निक है डिफेंसिव खेलने का. Yeah. Do you think KL Rahul is a better opener in foreign conditions than Rohit Sharma? Records say that way. So yeah, I mean, because I think his average in Australia isn't that great, but रोहित शर्मा का भी एवरेज इतना अच्छा नहीं ऑस्ट्रेलिया में. But I mean, KL Rahul has scored hundreds overseas. I think all of his
hundreds except for one have come overseas. So I mean that shows that he has the technique, he has the temperament to play, fast bowling, swing bowling, rather I than like think this guy, Matthew Hayden in commentary said, right, like KL Rahul is a batter who should be sort of making, should have an average of above 60 in test. Like he has all of the qualities that are required for a batter to have that. yeah, तो मतलब भाई जो भी उसके अगेंस्ट फैंस का फ्रस्ट्रेशन है आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट इज डाउन टू हिम मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशंस उससे इतना ज्यादा एंड ही इज probably not able to deliver on that because I think similar to what sort of Rohit had early in his career, right? Like everyone knew he has the ability, but yeah, those numbers were not coming through. And KL, to abhi, you can't like call him a young player. He is like a 31 now, 31, 32 or something. Yeah. मतलब he should be like the senior player in the team. He should be the one taking over from Rohit and Kohli as the next senior batter. But The पता good, नहीं. the I good don't know. partnership also was that KL Rahul was actually guiding Yashasvi because Yashasvi एक टाइम था हेजलवुड का जो स्पेल चल रहा था, ही वाज लुकिंग रेस्टलेस, तो वो Yeah, गाइड कर रहा था कि तू टिके रहे रन आ जाएंगे. जब उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप वो लोग डाले जा रहे थे एंड लाइक Yeah, ही प्लेड एंड मिस्ड अ फ्यू बॉल्स. yeah. So that was good to see that like he's guiding these young people. So Yeah. yeah, that is a good sign, and I hope कि दोस्तों का partnership हो जाए. I think that will be a record. I'm not sure that would be a record at least in the last 10-20 years. कि फॉर श्योर डूड मेरे को तो कभी याद ही नहीं है कि अपना टीम बाहर गया और बाहर जाके अपने ओपनर्स 200 का पार्टनरशिप कर रहे हैं हाँ, लाइक हाँ, मतलब एटलीस्ट इन सेना कंट्रीज. yeah, say now only. या बट क्या लाइक नाउ नेक्स्ट मैच रोहित शर्मा विल कम बैक राइट. Yeah, तो ये केएल राहुल के साथ क्या करेंगे भाई. कल को इसने सेंचुरी मार दी. सेंचुरी क्या मतलब फर्स्ट इनिंग्स में भी ही लुक लाइक that's top a actually. class apart, Yeah. and in this innings also he's killed it sort of. So क्या like does he go down back to like number 6? Of There- course मतलब opening तो नहीं करेगा. There's no other option because I think शुभमन गिल फिट हुआ तो वो 3 पे खेलेगा. Hmm. I mean KL Rahul has to play instead of Dhruv Jurel, but then they put faith in Dhruv Jurel that he Yeah. will in the A game, so it's unfair on him also to go out. So there is a bit of a problem of plenty हो गया suddenly, where before the test match there was a problem of few कि कौन खेलेगा प्लेस पे, because सरफराज फॉर्म में नहीं है, केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, ध्रुव जुरैल इज inexperienced. So now it has become a problem plenty कि भाई रोहित और गिल आएंगे तब कौन जाएगा टीम. So that will be interesting, but yeah, I mean good signs actually. Good Hmm. problems of But plenty. क्या कहते हैं मतलब ये केएल राहुल के साथ इट्स सच अ क्लासिक प्रॉब्लम राइट. लाइक he has played in all the positions and it's in some capacity he has done well also in some of those roles, but he's also been inconsistent. But क्या है मतलब उसकी inconsistency का reason है because he's played so many positions or the other way around like he's been in मतलब it's I kind of I hmm, personally best place is opening, but yeah. we found Abhi Jaiswal and Rohit is there. So maybe after Rohit retires, KL is your natural replacement there. Uh, Intent merchant. yeah, intent, but I don't know how much intent merchant would have worked on this pitch because अगर इधर मारने था तो पक्का आउट होता था या रोहित. या So कल आ रहे थे ना मीम सब जगह से कि अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता याद लाइक आता इट था वुड. याद आता 18 in 11 but in a losing. So yeah, I mean it'll be interesting. Personally, I would like to keep the same team because if we win, personally, like I mean, Gill comes in place of DDP. या I शुभन mean, गिल. yeah, but Bumrah has been impressive with his captaincy. So Bumrah's been very impressive, dude. उस पे भी आता है. We'll come back to that point again. yeah, But yeah, let's talk about the other opener who killed it today, Mr. Yashasvi Jaiswal, yeah. India's highest run scorer for this year. Oof. While Yashasvi Jaiswal is closing in on Joe Root. What? Uh, yeah, Seriously? Joe Root is at 1338 runs, and Jaiswal's already crossed 1200 runs for this year. That So that I have a interesting
interesting stat for you. Jaiswal is now the like leading run scorer amongst left-handers for India ever in a That calendar year. crazy, And crazy. matlab, you think about like left-handed batters, India has had some great left-handed batters, right? Like playing in the test team. And for a young guy to come in and already वो उसने भाई मतलब ये साल तो उसने काफी किल कर दिया है. Yeah. And मतलब Last, 1200 plus. last year also was crazy for him. This year actually Yeah, the average has dropped. The last year I think the average was 60 plus. 60 plus. अभी थोड़ा 56 या कुछ हुआ है. So but still remarkable consistency. Even in those pitches in India, like New Zealand के सामने, he didn't get 100, but he looked quite confident. और Yeah, उनको भी पता था कि जायसवाल है तब तक लाइक गेम बन सकता है इंडिया का. वो आउट true. हुआ तब सब लोग ऐसे गिरे जब एक्सेप्ट फॉर ऋषभ पंत. तो या आई मीन So ही गेम चेंजर. लाइक ही इज बीन अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस. like आज भी जैसे वो खेल रहा था there were like times जब वो play and miss कर रहा था but like you knew like जैसे ही उसने थोड़े runs बनाए that confidence came in. वो या भाई एक टाइम पे 50 मारने के बाद जो स्टार को आर्क को भी बोल रहे धीरे आ रहे तेरा बॉल बहुत तेज डाल भाई तो करके स्टार को छक्का मारा उसने सीधा फ्लिक क्लिक करके भाई. शॉट. एंड सम वेरी गुड स्ट्रेट ड्राइव्स मतलब ही गुड डिफेंस गुड ड्राइव्स बीच या में अटैकिंग शॉट्स भी उठा के भी वो मार रहा था सो लाइक टुडे ही शोड हिज फुल रेंज ऑफ बट स्ट्रोक्स. he was leaving the balls outside off stump, which was या like, या so that is the most important thing here. So yeah, and even singles चुरा रहे थे वो लोग. So that was also like great to see. I hope he gets his 100 here, and I think celebration wild रहेगा अगर वो 100 मारा तो, कम because ऑन like 10 runs away. yeah, Fingers crossed he can do it tomorrow. And yeah, but pretty crazy run for Yashasvi Jaiswal. I think we found a key, like a good opener yeah. for at least for the next 10 to 12 years easily. Across Easily formats, across formats. across formats. Yeah, Yeah, मतलब अभी तक T20 में पता नहीं T20 ओडीआई में इसको पता नहीं क्यों नहीं. में भी बहुत मस्त खेला उसने. हाँ सेंचुरी हाँ मारे आई थिंक. मतलब he has to be there. मतलब that boy has the hunger in him. एंड Yeah, अभी भाई उसको एक्सपोजर भी मिल रहा है ओवरसीज का भी एंड ऑस्ट्रेलिया जाके 90 मतलब मजाक नहीं है भाई. मतलब जैसी भी पिच हो मेकिंग अ 90 अगेंस्ट द बेस्ट सॉर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड. एंड या अभी जो रूट के जस्ट पीछे है भाई अभी बचे हुए 4 मैचेस में वो एक्चुअली पकड़ सकता है जो रूट को. कर तो सकता है. आई थिंक मेलबर्न या इज बॉक्सिंग डे वन, which is like your last न्यू ईयर टेस्ट, राइट. कर तो तो सकता यस है थ्री थ्री टू थ्री. न्यूजीलैंड. तो उधर जो रूट थोड़ा स्टैट पैड कर सकता ओ या है. सो होपफुली नॉट होपफुली एज अ बैड वन जो यूजुअली वो करता नहीं है बट yeah, but yeah, I think let's we have to talk about Bumrah's captaincy, right? Like भाई काफी मजा ही आया मेरे को तो देखने में. या इंडिया के लिए फास्ट बॉलर कैप्टन आई थिंक लास्ट वी न्यू अबाउट हर्ड अबाउट वाज मे बी कपिल देव. एंड या वी वर क्लियरली नॉट ऑन द नॉट नॉट born till then. तो हमने बस सुना है मतलब अपने पेरेंट्स के थ्रू और लाइक अदर पीपल what Kapil Dev was like. And to see Bumrah in full flow, I know he had captained in that one match in World Test Championship, but उसके अंदर मतलब कुछ इतना you don't get the proper flavor of it. Like यहाँ पे build-up में उसका press conference आ रहा है. You see the way he's talking, the way he's presenting his ideas. So you get to know quite a lot. And मुझे तो काफी अच्छा लगा भाई. I वेरी. think he's nailed on. He led from the front. That's what you want from a captain. Led from the far front, very confident, and it seemed like the whole team rallied around him, right? And bowlers के साथ a lot of times the worry is at least what people say कि bowler अगर captain होता है तो उनकी खुद की bowling पे impact पड़ता है बहुत. Yeah. And they are not able to make decisions properly in the field because they're also thinking about their bowling, also thinking about how the game is going. But मुझे तो ऐसा नहीं लगा भाई. मतलब He's very उसने smart. It's not like a ऐसे ही कोई एक उठाया है और he's very smart. That's why he got those wickets. Like उसके wickets भी बहुत variation से भी आते हैं. Like if you like yesterday, वो एक उसने last ball जो डाला था स्टार्क को almost wicket आ सही में स्लोअर गया. वन Yeah, ऑफ स्पिन फास्ट ऑफ स्पिन. and that is like very hard to read. So like he's very smart that way, and he
he can be full-time captain, but the only issue is injuries. You have या to keep him, मतलब fit. अगर वो सीन नहीं होता ना भाई, मतलब मतलब एटलीस्ट ही कैन डू व्हाट मे बी लाइक कुंबले डिड, ऐसे 2-3 साल कैप्टनसी करके एंड देन हैंड इट ओवर टू समवन एल्स. The only concern is that you don't want to play him in like all your matches हाँ because भाई, वो कानपुर वानपुर जैसी पिच के ऊपर खिलाने लग गए इसको तो. already lost 1 year of Bumrah या World Cup year, but you don't want, uh, भाई भगवान कुछ मत होने देना बुमराह को. uh, game changer player. He is. Only one ओनली just, ओनली वन गेम चेंजर. yeah. जस्सी भाई, आई बिलीव इन जस्सी भाई. बट यार टॉकिंग अबाउट बुमराह राइट, मतलब इसने एक एलीट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया है ब्रो. लाइक टेस्ट फाइफर्स बाय इंडियन कैप्टन अवे फ्रॉम होम. Yeah. भाई बिशन सिंह बेदी ने 4 फाइफर्स लिए हैं आउटसाइड इंडिया एज कैप्टन. माय गॉड, must have been a crazy player for a left arm spinner to take do that. But yeah, moving on. Vinu, Mankad, Kapil Dev, Anil Kumble, Bumrah. Yeah. And Bumrah का ये second match as captain है, so take that into consideration. काफी crazy dude, काफी crazy. I think he every time he now plays, Yeah. I think ये Bumrah ने he spoiled us as Yeah, fans, dude. and like I follow a lot of like these Twitter accounts, and there are like many Aussie Twitter fans also, or fans on X or Twitter. They are saying that they've seen Magra and all these guys, but Bumrah is probably one of the best pacers they've seen. और उन लोग No ने doubt. या उन लोग ने मगरा देखा है, उन लोग ने गिलेस्पी देखा है, ब्रेटली देखा है, ये सब लाइक लेजेंड्स देखे हैं, but they are rating him so highly, so you can like just imagine how good he is. So yeah, I don't that know if as like I think he does get a lot of appreciation. भाई एक तो सबसे फनी चीज कल वो संजना गणेशन के ऊपर कितने मीम्स आ रहे थे. yeah, बोल रहे संजना हट जा आज, मैं बैठूंगा. अभी बढ़ती है. लोग फिर ऐसे मीम्स डाल रहे हैं, माय हस्बैंड को क्रॉस करके आर हस्बैंड. बट आई थिंक एवरी टाइम ही गोज आउट, मतलब वो अनबिलीवेबल सिचुएशंस में से वापस लेके आता है. लाइक यू थिंक अबाउट इट, इंडिया ने भी 150 बनाया था. 150 was not a great score, right? But because of the bowling effort that Bumrah has put in, उसकी वजह से ये बाकी दोनों बॉलर्स भी अपने चार्ज अप हो गए, हर्षित राणा भी, सिराज भी. एंड नाउ वी whatever, we are ahead in the game, leading by 218 runs. मतलब his performance has completely turned the match around. Absolutely, absolutely. गेम मतलब चेंज कर दिया गेम. आई Game changer only. भी किया है उसने. तो स्टीव स्मिथ had no clue बॉल अंदर आ रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं था स्टीव स्मिथ को. भाई एंड वो स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू है, उसके बाद वो रिव्यू के लिए पूछने के लिए जा रहा है, बट उसकी शक्ल पे लिखा होता कि भाई मेरे को इसने बना दिया है पूरा. एंड यू सी कोहली सेलिब्रेशन आफ्टर दैट विकेट. कोहली तो मेरे मेरे से कम रन बना, अभी मैं सेलिब्रेट करूंगा. सो कोहली को जो हो रहा है कि भाई मैं सिर्फ, मेरे को गाली नहीं पड़ेगी, ये भी स्ट्रगल कर रहा है. सो या आई मीन क्या ही बोले बुमराह के बारे में, बट वी शुड ऑब्वियसली कीप हिम लाइक सेफ. कुछ या एक्स्ट्रा I think one like extraordinary stat, I think another one that was mentioned, right? Like दिस during commentary. इज दैट. Why though he has the best, like one of the best bowling averages, minimum 150 wickets in test matches. एंड तू बाकी नाम जो देखेगा भाई, ये सब कभी सेवेंटीज ऑल एटीज टाइमर है सब लोग, सब ऑल ऑल टाइमर्स. एंड दीज आर बॉलर्स, ये लोग खेलते थे जब मतलब पिचेस यूज्ड टू बी मच मोर टफ टाइम. फॉर बैटर. फ्रेश पिचेस होती थी उस टाइम पे. एंड मतलब क्या बैटर्स के पास हेलमेट नहीं होते थे पूरे, प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता था. छह छह बॉल बाउंसर डालते जाओ. Yeah, that is like insane. And he just played, 41 matches, which is like a travesty. He should have been like playing some 70 matches so far. 70 matches या 300 400 विकेट सही हो में. जाते. 400 विकेट आराम से हो जाते थे. Had he played 70 matches. Because and the best part is उसका एवरेज इंडिया में जहाँ पे
conditions favor नहीं करती, it's like 19 or something. या He's 10. So इंडिया में भी विकेट्स लेता भाई, लाइक ऑलमोस्ट 30% ऑफ हिज विकेट्स हैव कम इन इंडिया, तो मतलब New Zealand is where he's not performed as well as other countries, but England, आई South एम श्योर Africa, अभी उसको भेज दो, कल अभी ही वो भेज दो. yeah, लाइक but ही इज द ओनली बॉलर इन द वर्ल्ड आई फील राइट नाउ जिसके लिए मैटर नहीं करता है सरफेस कैसा है. अगर totally सरफेस में थोड़ा सा भी कुछ है बॉलर के लिए, देन ही जस्ट बिकम्स एब्सोल्युटली अनप्लेएबल. नहीं है तो भी वो कुछ ना कुछ तो रिवर्स स्विंग करेगा, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, समथिंग समथिंग ही विल डू. एंड या सो मतलब सच डोमिनेंस अक्रॉस फॉर्मेट्स मैं या तो कभी अपने पूरे लाइफ में नहीं सोचा था भाई कि इंडिया के पास इतना अच्छा, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर. एंड द वे ही इज गोइंग, इफ ही गोज ऑन प्लेइंग लाइक दिस, ही माइट जस्ट बी लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. या ही नीड्स वन वर्ल्ड कप. ऑल पहुंचे थे बट हुआ नहीं. द ओडीआई वर्ल्ड कप. एंड या आई Do you थिंक still put like the same amount of weightage on a ODI World Cup, given कि कितना आजकल खेलते हैं ODI World Cup? legacy, bro. It has legacy. You saw how Rohit हाँ. Sharma was speaking about the ODI World Cup. उसने बोला भी है कि ये actual World Cup है मेरे लिए. Because all these players have seen like grown up and seen कि 50 over World Cup जो है वो हम लोग के लिए मायने रखता है. Maybe the younger generation will feel the IPL and T20 World Cup as the as a priority. But for these old who already have played for India, for them obviously it's the 50 over one. So yeah, Interesting, interesting. I think live and like just coming back to the match, right? Live and probability अगर तू देखेगा तो अभी करंट स्कोर के ऊपर ये बोल रहे हैं कि 82% चांस है इंडिया का जीतने का, 6% चांस है ड्रॉ का. पता नहीं कैसे होने वाला है वो 6%, मतलब मैच तो नहीं जाने वाला the rain. लास्ट डे तक. Is there rain predicted? नो आई डोंट थिंक सो. 6% एंड is ऑस्ट्रेलिया 6% is quite high for a draw. and like 12% odds for Australia winning. Uh, That's okay, but I mean 6% draw मतलब क्या rain win नहीं होना चाहिए बस. That's all. that will be a buzzkill. मतलब पूरा मेहनत करके भाई बारिश हाँ लिटरली पानी फिर जाए इनके ऊपर. हाँ. But yeah, I just want to say like for the viewers, whoever is watching, guys, please like the stream. If you are enjoying what we are doing, subscribe भी मार दो और chat के अंदर हमें बताते जाओ कि भाई क्या क्या what are your thoughts on this match. Like if you But want yeah. to want the content, then give your suggestions also. Uh, कर सकते हैं जो आपको चाहिए. हिंदी में करना है, मराठी में करना, मराठी में भी कर सकते. मराठीमध्ये पण करू शकतो आम्ही, असं काय नाही. आम्ही अजून लोकांना घेऊन येऊ शकतो जे मराठी बोलतात. या बट या कमिंग बैक, तो क्या लगता है इंडिया के लिए व्हाट इज अ सेफ स्कोर की जहां पे बोल सकते हैं कि हाँ भाई अभी ऑस्ट्रेलिया इतना तो बना नहीं सकता, क्योंकि अभी एंड ऑफ द डे अगर तू पिच देखेगा तो भाई काफी इजी लग रहा था यशस्वी और केएल के लिए, मतलब अनलेस ये लोग खुद को ही मिस्टेक करते हैं ऐसे लग नहीं रहा है कि ये लोग आउट होंगे. तो तो अभी आई दो. आई थिंक अभी जिस लाइक अभी जो स्टेज पे हम लोग, आई थिंक 350 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम. हम्म. बोनस है. Because what even Ponting and all these analysts on like Fox was saying is that tomorrow it's going to be the hottest day there, and the cracks are going to open up. या And when they open up, ball will like spin, low bounce, like variable bounce कुछ भी हो सकता है. और तब तो भाई अपन अगर वही लाइन पकड़ के डाले तो खत्म. But yeah, I think by the start that we've got, I think everyone should just stat pad till tea tomorrow, and then उसके बाद उनको दे दो बैटिंग. But if we bat tea tomorrow, I think we'll get a good lead. We'll get a lead of even 400. Because अभी तो सब अपने स्ट्रोक मेकर्स आने वाले, जो ऋषभ पंत. सही में अभी तो मस्त सब हाँ, लोग को भाई बैठी गंगा में हाथ धो लेने चाहिए अभी. मस्त कल सुबह आई थिंक दे विल कम विद द प्लान टू प्ले 2 सेशंस, एंड तीसरे सेशन तक इनको लेके आओ अंदर ऑजीज को. आई थिंक जायसवाल अभी सेंचुरी तक खेलेगा और और उसके बाद फिर एक्सप्लोर. एंड इवन केएल राहुल, आई थिंक वो एंकर रोल खेलेगा एंड एवरीवन विल बैट अराउंड हिम. I think that would be the plan, and that should be the plan because he said let everyone around him attack. Like Kohli आई हो. थिंक द
Michael हो, पंत हो, जो भी आएगा. But KL Rahul should probably stay till the end, and others can just attack around him. आई थिंक लास्ट मैच जो पर्थ में हुआ था दैट हैपेंड लास्ट ईयर इन दिसंबर, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान. सो ऑस्ट्रेलिया हैड मेड 487 इन द फर्स्ट इनिंग्स, देन पाकिस्तान मेड 271, और फिर ये लोग 233 बना के डिक्लेयर कर दिए थे. एंड हाँ. पाकिस्तान गॉट आउट फॉर 89. मतलब पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज अ वेरी सबपार टीम, बट फोर्थ इनिंग्स में वो लोग 89 पे ऑल आउट हो गए थे. एक तो बार मतलब खुल गया तो कुछ भी हो सकता है. Then it's a deadly pitch ओ because वेट. हाँ, गो ऑन. we've got the bowlers to do it. Because like Bumrah तो line पकड़ के डालता है, and even Washi will come and play because उसका ball turn क्रैक्स. can be very dangerous. एंड उसके पहले का मैच अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज में, तो उसमें भाई वेस्ट इंडीज ने फोर्थ इनिंग्स में 333 बनाया था, 333. बट इन दैट मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया had मेड 598. तो एकदम इन्होंने बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई हुई थी लगता है उस टाइम. मतलब एंड इफ यू settle down अभी थोड़ा flat हो गया है, but it depends on like how the cracks open up. But ideally we should bat till tomorrow tea time at least. दो सेशन तो या बैट 350 400 तो लीड देनी ही चाहिए. 400 मतलब या 400. एकदम दबा के रखना चाहिए, बिकॉज लाइक वी नो फॉर अ फैक्ट कि भाई टाइम तो है अपने पास, टाइम तो बहुत सारा है मैच में अभी भी, राइट. And they also will be tired. I think those guys are already mentally jaded. I think या देर होने लगने वाले हैं वो लोग, because लाबुशेन एंड ऑल दीस गाइस आर बॉलिंग. ट्रेविस हेड भी आया था बॉलिंग करने और उसको भी मारा. अभी स्टीव स्मिथ भी आएगा आई थिंक लेग स्पिन डालने. भाई ट्रेविस हेड को देख के तो इतना गुस्सा आता है. So yeah, I So mean, annoying dude, that guy. it's a fun day for us. Hopefully, we just like know step it up and just go for it, man, because platform is set. Yeah, but do you think too early to say कि क्या कहते हैं, मतलब I think this sets up the series pretty well, right? Like अभी तो यहाँ से तो इंडिया को हारना नहीं चाहिए, मतलब it is in our hands ये now. बट द थिंग इज, वो एक आपको वो वाला याद है बुमराह की कैप्टनसी में ही था. द आई थिंक वी मेड 378 for England to chase and they chased it down with like 7 wickets. हम्म. वो आई थिंक जो रूट एंड बेयरस्टो ने तोड़ा था and Bumrah ओ was. यार. So yeah, for safety, just make 400 and then we'll take it from there. Well, Is is there were sorry. someone raise their hand in chat or something? या क्या बोल रहे हैं भाई लोग? No, I'm not able to see. No, But just yeah, coming back. Uh, I think before this series started, right? Like there was a lot of discussion, lot of conjecture around कैसे इंडिया ने खेला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. एंड बहुत डाउट्स है, मतलब मुझे भी डाउट था यार. मुझे तो लग रहा था कि इनफैक्ट दिस कुड बी लाइक अ एम्बैरेसिंग सॉर्ट ऑफ टूर फॉर इंडिया. yeah, मतलब it still might be, I hope not. But early signs are like players are looking fired up. They are looking to put up a fight. मतलब समटाइम्स वी फॉरगेट, राइट, लाइक कि यही वो टीम थी जो इतने सालों से मतलब बाहर जा रही थी, फाइट दे रही थी सब टीम्स को. एंड it's so yeah, like in though that terms, like I think it sets up the whole series pretty well. एंड yeah, अगर कोई टीम है जो इन ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है वहां पे, एंड ऑस्ट्रेलिया को 4-0 या 4-1 मार के जा सकते हैं WTC अभी भी, देन इट इज इंडिया. एंड लाइक स्पीकिंग ऑफ दैट, राइट, लाइक टेस्ट मैचेस अगर तुम देखोगे वन बाय विजिटिंग साइड्स इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2000, India has played 26 matches and won 6, like which is the most. yeah, Even though we've the like England is like to dekhiye, South Africa has won 5 out of 18. I think there was a period when South African team was doing pretty well down under ये yeah, ग्रेम स्मिथ के अंदर जो टीम बनी थी उनकी. एंड इंग्लैंड has gone played 30 times in Australia and won 4 times. तो they've clearly not had a great time. बट उसके अलावा तू देखेगा उसके बाद it's just like New Zealand who's won once,
and no one else has won a test match. West Indies has won once, and yeah, none of the other teams have won even a single test match in Australia. Yeah. So India clearly has an edge over them, and हरा सकते हैं भाई. मतलब I still feel that WTC I, dream is still alive. I think only three teams in history have like beaten Australia three times in a row or something. Uh, Hmm. ऐसा कुछ record है. I think England in the 1800s. One is the West Indies, and I think one is South Africa. Like Yeah. it's the three series in a row in Australia. So we could be the first Asian team to do it if we do it this time. So yeah, that would be Come a on. historic thing, and what a change of fortune that would be for Gautam Gambhir from हाँ the भाई, मतलब कर दिया तो एकदम जीरो से हीरो. मतलब उसकी इतनी photo सब all लोग बजा रहे थे कि भाई गौतम गंभीर कमेंट्री करना इजी है, ये करना yes, कोचिंग करना मुश्किल है. बट दैट्स हाउ इट वर्क्स इन स्पोर्ट, राइट? लाइक इफ यू विन यू आर द हीरो, इफ यू लूज बाकी है हम लोग सब जज्बाती. भाई मैं खुद कल जब इंडिया 150 पे आउट हो गया था, मैं खुद बोल रहा था कि भाई हटाओ ये गौतम गंभीर को, घर पे भेजो, इसके बस की नहीं है, निकालो इसको. इससे नहीं होने वाला कुछ. हर्षित राणा केकेआर कोटा से हर्षित राणा को खिला रहा है. इंडियन फैंस वैसे ही है, वेरी जज्बाती पीपल. सो या आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द होल थिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग, राइट? या पर या चलो, तो ये तो अभी अपना हो गया है, क्या कहते हैं, फर्स्ट टेस्ट मैच. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, क्या होगा कल? यार कल तो मुझे लगता है ये लोग मस्त खींचने वाले हैं. सेकंड सेशन तक खींचेंगे. 350, 400, 450 का लीड, मतलब जितना बना. लाइक एक बार ही भाई है, जायसवाल का सेंचुरी हो गया सुबह. आई थिंक फर्स्ट फ्यू ओवर्स दे विल बी अ लिटिल वॉचफुल. या थोड़ा सा बॉल घूम सकता है इधर उधर. बट या दे विल गो आफ्टर देम. कल विराट भी आके कोशिश करेगा रन मारने का. ऋषभ पंत विल बी इन फुल फ्लो. आई थिंक बैटिंग भी अपना बहुत डीप है, तो ये लोग मस्त ठीक है. एंड तक मार सकते हैं एकदम. तो मस्त चांस है. मतलब अभी जो एडवांटेज है मैच के अंदर, हमें वी हैव टू कैश इन, राइट? या एंड मोर और लेस, मतलब यू कांट राइट ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स. बट या यहाँ से भी अगर हार गए तो देन भाई मुश्किल है थोड़ा इंडिया के बहुत लिए. बहुत डिमोरलाइज हो जाएगा टीम, बहुत. फिर तो खत्म हो जाएगा भाई. 36 is like the lowest of lows. This would be तुम लोग हाई से आके एकदम रॉक बॉटम हिट हो गए, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग. पर या 30 लाइक ओके फाइन, वी वर लाइक outplayed completely. इसमें like we were dominating the game for like 90% and then suddenly, so that shouldn't happen. But hopefully, like talking about positive things, I think we should win this game because भाई, जो भी देख रहा है हमें चैट में भी बताओ कि क्या लग रहा है. व्हाट इज योर प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच, फॉर दिस सीरीज? कैसा लग रहा है अभी तक? हाउ डज इट फील टू सी आवर प्लेयर्स डू सो वेल डाउन अंडर? टेल अस. एंड या थोड़ा लाइक वाइक भी मारते जाओ, शेयर करते जाओ. कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो. यस. या हमें नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम कब, कल करने वाला है ना अपन? हाँ, आफ्टर द आईपीएल ऑक्शन. फन डे है. फन इट्स डे. IPL auction day. So yeah, आईपीएल ऑक्शन, एंड आई थिंक we are going to have some guests also on the channel. We are going to get there's going to be fans of RCB, Sunrisers Hyderabad, KKR who are going to join us in the stream. So it'll be a fun one. So make sure you join in for that. Cool. Amesh, should we wrap up? Anything else you want to highlight, share, talk about? no, I think we are good. Just hoping for a Indian win today. That's it. Come on. Come Yeah. on. Let's go. Cool. All right. Thank you people for tuning in. We will see you tomorrow. And भाई शेयर कर देना वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो. Thanks a lot.